एकदम अचार की खुशबू आ रही है। थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा। Hello and welcome to Shipra's kitchen, and today I'm going to cook a spiced corn pulao for you. To make spiced corn pulao, first of all, we need to heat some olive oil. I'm going to add some black peppercorns to it. For the extra spice and extra heat, cinnamon sticks, let it splutter, cumin seeds. अब हम इसको splutter होने देंगे. Can you hear that? I'm going to saute the onions. These are American corns which are already boiled. A little bit of salt. Quick mix. A little bit of pepper. Quick mix again. I'm going to add brown rice. A quick mix again. Great. Corns when in season are really yummy. They're sweet and really delicious, goes really well with salt or dessert as well. I like a little bit of salt on the corn. जब भी हम बारिश के दिनों में भुट्टा खाते हैं उसके ऊपर नमक मिर्ची लगाते हैं, oh my god. I think monsoons is something that I await specially for corn. Because वो season में आता है and I think it's just one of those things, you know. Now I'm going to top it with pumpkin seeds. Super healthy, full of nutrition, and they give a good texture as well. A quick mix. इसको जल्दी से प्लेट करेंगे. It's smelling really different क्योंकि इसके अंदर peppercorns हैं, दालचीनी यानी कि cinnamon है, corn है, pumpkin seeds हैं. It's really different. And of course it's nutritious. Can't get better. बच्चों को आप टिफिन में दीजिए, अपने साथ ऑफिस लेके जाइए. Have it for breakfast, lunch और dinner. इसको मैं गार्निश कर रही हूँ कोरिएंडर के साथ. और ये लीजिए हमारा सुपर हेल्दी स्पाइस्ड कॉर्न पुलाव तैयार है. स्पाइस्ड कॉर्न पुलाव को स्पाइसी बनाने के लिए आप इसके अंदर डाल सकते हैं लाल मिर्ची, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.